For the monod equation with substrate inhibition given by mu is equal to mu m s divided by ks plus s square by ki, there are two theoretically possible steady state solutions in a CSTR. Out of these, both are stable steady states. The lower substrate concentration represents the stable steady state, the higher substrate concentration represents the stable steady state, या फिर both are unstable. So what happens is that if there is a single enzyme catalyzed reaction and this is the rate limiting step then inhibition of enzyme activity, it results in inhibition of microbial growth. Okay. Then the result inhibition of enzyme activity, it results in the inhibition of microbial growth. So that is why we have the formula that mu is equal to mu ms upon ks plus s square by ki. So ये किस में हम ऑब्जर्व करते हैं? This is observed in substrate inhibition. This is observed in substrate inhibition. यानी कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी माइक्रोबियल ग्रोथ क्या होगा? सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी सो माइक्रोबियल ग्रोथ क्या होगा? दिस विल डिक्रीज. सो स्टेडी स्टेट पे कब होगा? व्हेन द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज लो. स्टेडी स्टेट कब होगी? व्हेन देयर वी हैव द लोअर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. दैट इज ऑप्शन बी. दैट इज द लोअर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट्स द स्टेबल स्टेडी स्टेट फॉर दिस इक्वेशन.